morning students. In CBSE sample question paper part A section first, question number 12. What is given in this question? Look this side. There is given to divide a line segment BC internally in the ratio 3:5. We draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the maximum number of points to be located at equal distance on the ray BX? Students, this question is coming from chapter number 11 construction. Construction से ये question है. What is given? BC is a line segment. BC is your line segment which will be divided in the ratio 3:5. You have to divide this line segment into 3:5. That's why you have to make an acute angle here. BC आपके पास में कोई line segment है and we draw an acute angle. Angle क्या हो जाएगा? CBX that is already given to you. It is acute angle. So angle B is equals to less than 90. So what we have to do? We have to make the equal parts on the line segment on the ray BX. BX के ऊपर मुझे क्या करना होगा? Equal parts में divide करना होगा. That is given in the question. We draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at the equal distance on the ray BX? BX में number of जो अपने पास में equal gaps में अपन R cut out करते हैं वो कितना होगा? You have to take the addition of these two quantities. जिस ratio में अपन को divide करना होता है उन ratios को अपन क्या करते हैं? Add करते हैं. And you have to add these two terms 3 and 5 दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? Add करना पड़ेगा. When you add these two terms 3 plus 5 कितना आ जाएगा अपने पास में? 8. So you have to make 8 equal parts of the ray BX. आपको ray BX के कितने पार्ट करने? 8 equal parts करने. How can you make it? Take an equal length. Okay. Here B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 or B8. How many parts we have to divide here? We have to take 8 parts. Clear to you? Students, after question number 12, question number 13. What is given in this question? For what value of P does the pair of equations 4x plus py plus 8 is equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equals to 0 has unique solution? Okay, look this side. You are having two equations 4x plus py plus 8 equals to 0 and another equation 2x plus 2y plus 2 equals to 0. This is your equation number 1 and equation number 2. This is pair of linear equation. For what value of P? P की क्या value होगी? For which that equation is in unique solution. Equation of pair of equation has unique solution. तो इसके लिए क्या होगा अपने पास में? Do you know the condition? A1 upon A2 for the unique solution. Unique solution के लिए अपने पास में जो condition होती है क्या होता है वो? A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. That is the condition for the unique solution. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. Here A1 upon A2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा? 4 and 2. A1 upon A2 4 and 2 and B1 and B2. This is P and 2. Okay. Can I place this term here? A1 upon A2 is equals to 4 upon 2 and B1 upon B2. That is means हम लोग coefficients के ratio of the coefficients किसमें? pair of linear equation जैसे A1 upon A2 B1 upon B2 compare करेंगे तो A1 upon A2 क्या आ गया अपने पास में? 4 upon 2 and B1 upon B2 कितना आ जाएगा? P upon 2. Right here this is P upon 2. You have that condition A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 for the unique solution. So A1 upon A2 4 upon 2 which is not equals to P upon 2. Now the value of P is equals to 4 is not equals to 4. तो क्या condition होगी? For what condition of the P that pair of linear equation have unique solution? किस condition के लिए pair of linear equation क्या होगा अपने पास में? Unique solution होगा. In this case P accept all the value from P equals to 4. 4 के अलावा कोई भी value होगी for this. Therefore for all the real values of the P except 4
द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। 4 को छोड़ के जो भी वैल्यू रखोगे ना तो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर टू यू? इफ यू प्लेस हियर 4 देन 4/2 4/2 a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट्स वाई इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में p की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 4 नहीं आनी चाहिए। फॉर दिस इज है यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर टू यू? सेकंड, द और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट भी गिवन है। व्हाट इज द और पार्ट? What type of the straight line will be represented by the system of equation 2x plus 3y is equals to 5, 4x plus 6y is equals to 7? We have pair of linear equation. First, 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus 6y is equals to 7. This is pair of linear equation. So which type of the solution is considered in this case? तो अपने पास में किस टाइप का इसका ग्राफ प्लॉट होगा और किस टाइप की इक्वेशन आएगी वो चेक करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले वी हैव टू कंपेयर द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट इन दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वी हैव टू टेक आउट द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट। a1/a2 आपको कैलकुलेट करना है, b1/b2, नेक्स्ट c1/c2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1/a2 इन दिस केस? a1/a2 2 and 4, right here 2/4, b1/b2 in that case 3 and 6, this is 3/6, and c1/c2 this is 5 and 7 when you shift another side, because the standard equation of the pair of linear equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is your equation number 1, this is your equation number 2. तो अपन को क्या करना होता है, इनके वेरिएबल्स जो है अपने पास x एंड y है, इनके कोएफिशिएंट लेते हैं अपने पास, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे c1/c2 कितना आ जाएगा, 5/7, -5 -7 तो क्या हो जाएगा 5/7। ओके, नाउ कंपेयर a1, सिंप्लीफाई किया ये कितना आ जाएगा 1/2, सिंप्लीफाई किया ये कितना आ जाएगा 1/2। हियर a1/a2 एंड b1/b2 and c1/c2. Here the condition for a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. How can you say here 1/2 is equals to 1/2 is not equals to 5/7? ये कंडीशन आ रही है अपने पास में। मीन्स यहाँ पे क्या, a1/a2 means the coefficient of x and coefficient of y are equal in this case. The ratio of the coefficient of x and y in pair of linear equation are equal, but the coefficient of constant term is not equal here. That's why ये कौन सी कंडीशन होती है अपने पास में, this is the case for no solution. ये कौन सा केस होता है अपने पास में, no solution. No solution में अगर मैं ग्राफ चेक करूं तो no solution में जो ग्राफ आता है, here the pair of, this is the condition for pair of linear equation has parallel line. जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या होता है, पैरेलल लाइन। जब भी अपने पास में इन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ देन यू गॉट टू पैरेलल लाइन। ये अपने पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो क्वेश्चन में क्या था अपने पास में, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। क्या आएगा अपने पास में, पैरेलल लाइन। फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव सॉल्यूशन इन पैरेलल लाइन। जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Okay, a bag contains 3 red ball and 5 black ball. रेड बॉल कितनी है इसमें, 3 रेड बॉल है, एंड ब्लैक बॉल कितनी है अपने पास में 5। दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी से आ रहा है अपने पास में ये क्वेश्चन। ओके, रेड बॉल कितना है 3, ब्लैक बॉल कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा अपने पास में 3 + 5, 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू
8. Here P, probability for getting red color ball. Then what is the probability? How can you calculate the probability for red color ball? Is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, here number of favorable outcome it is given to you for getting red ball. Here probability for getting red ball, it is equals to 3 upon total number of outcomes, that is 3 plus 5, it is 8. Clear to you? So what is the probability for getting this case? That is 3 upon 8. Student, after question number 14, 14th or part, a die is thrown once. What is the probability of getting a prime number? Okay, what is the probability for getting a prime number? Look this side. When you are throwing a die, then you get a sample space like 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या आएगा अपने पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 आउटकम्स आते हैं अपने पास. टोटल नंबर ऑफ आउटकम, number of outcomes is equals to 6. Okay, for the prime number, how many prime numbers we are having here? Prime numbers कौन कौन से होंगे अपने पास में? 1, 2, 3, 5. Clear to you? 1 आएगा क्या इसमें? No, sir, 1 is not included as prime number. So how many prime numbers we are having? 2, 3 and 5. कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3 and 5. 2, 3 and 5 are the prime numbers. So for getting probability as prime number, तो प्राइम नंबर आने के लिए probability क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 3. ओके, तो 3 upon 6. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, 3 upon 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 upon 2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइम नंबर? इट इज 1 upon 2. क्लियर टू यू? सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाई, दैट इज इक्वल टू 1 upon 2. Clear? Students, after question number 14, question number 15, what is given in this question? A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Okay, look this side. There is your figure ABC. Here AB is the height of the tower. Height of the tower as h meter. We take the height of this tower is h meter, and the distance from this point C to B is 15 meter far away. From this point, the angle of elevation at the top of the tower is 60 degree. What you have to calculate in this case? Find the height of the tower. Okay, when you are mention the solution right here, AB is the height of the tower as h meter, and from the foot of the tower, that point is distance with 15 meter. From the point C, the angle of elevation is 60 degree. After this, in triangle ABC, कौन से triangle की बात कर रहा हूँ मैं? ABC. Here angle B equals to 90 degree. Angle B equals to कितना given है अपन को? 90 degree. Now here tan theta is equals to perpendicular upon base. Normally हमें पता है perpendicular upon base क्या होता है अपने पास? Tan theta. You know this is your base angle, that's why this is your base, and 9 means base angle के opposite जो side होती है that is called perpendicular. So 90 degree के साथ में हो रहा था ये perpendicular. You know this is your perpendicular, this is your base, and 90 के opposite जो side है that is called hypotenuse. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. So what is the value of tan here? Perpendicular upon base means perpendicular और base के बीच में relationship बनाना है. That's why tan theta equals to क्या आ गया? Perpendicular upon base. When this type of question is given to you, you have to make the relationship between their sides. Now tan theta, the value of theta is 60 degree. Place here tan 60 degree is equals to perpendicular. That line perpendicular is h, and what is base? 15. Do you know the value of tan 60? Tan 60 is equal to, sir, root 3. That is equal to h upon 15. Then when you have to calculate the value of h, 15 इस साइड में आ जाएगा 15 root 3 meter. This is your answer for the particular question. Once again, look this side. What is given? According to question, a tower stands vertically. एक टावर है, ये अपने पास में AB क्या आ गया? टावर.
Okay, this is stand vertically on the ground with the ground angle as 90 degree, and from this foot of the tower के foot से एक point है which is 15 meter far away. यहाँ से यहाँ तक की distance कितनी दी हुई है? 15 meter far away. From this point the angle of elevation at the top of the tower is 60 degree. इसके top पे जो angle of elevation कितना आ रहा है? 60 degree आ रहा है. What you have to calculate? Find out the height of the tower. Look this side, we have to take triangle ABC. Right angle triangle कौन सा आ रहा है? A, B and C. That angle is 90 degree. You know very well. Perpendicular upon base, that is equals to tan theta. For the base angle 60 degree. That's why tan theta equals to perpendicular upon base. The value of theta here 60. Tan 60 is equals to perpendicular. What is the value of perpendicular? AB is your perpendicular. That is H. And BC is your base. कितना है? 15. H upon 15. Now H upon 15 is equals to root 3. The value of H here 15 इस साइड में आ जाएगा 15 root 3 meter. Clear to everyone? So the height of the tower is H 15 root 3. If the value of root 3 also given here, then you have to place the value of root 3 which is 1.732. जो भी है value उसको multiply कर देंगे 15 से, then you get the value of exact height of the tower. Exact height of the tower calculate हो जाएगी. In question after question number 15, question number 16. What is given in this question? Probability of an event E. Probability of event E not E is. Look this side. Question is probability of an event E plus probability of the event not E, या E not is equals to, okay, you know very well, this is question also coming from the chapter number 15. This question also coming from chapter number 15. इसमें क्या given है? Probability of an event E plus probability of an event not event, probability of the event E not. ये क्या होता है? Not E. PE plus PE not. Okay, you can mention like this. तो PE not के लिए बात कर रहा हूँ. PE and PE not दोनों का sum कितना होता है? 1. You know about the complement probability. Complement probability क्या होता है अपने पास में? PE plus PE not दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. अगर आपको किसी की प्रोबेबिलिटी PE नॉन है तो PE नॉट कितना हो जाएगा? 1 माइनस PE कर देंगे. देन किसी प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन के होने की और नहीं होने की दोनों का जो कंडीशन का एडिशन आता है वो किसके इक्वल होता है? 1. इफ यू टॉस ए कॉइन, if you getting head, then you get 1 upon 2. And what is the probability of not getting head? That is also 1 upon 2. When you add 1 upon 2 and 1 upon 2, how much you get? 1. Clear to everyone? तो probability of event किसी event की होने की and नहीं होने की means P not, then the sum of these two terms is equals to 1. Clear to you? Student, after part 1, section first, I will tell you question part B, question number 21. What is given in this question? Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point 4, minus 3, 8, 5 in the ratio 3:1 internally. Look this side. AB is your line segment. Here A and B are having as coordinate 4, minus 3 and 8, 5. A point P, this point P is divide line segment in the ratio 3:1. So find out the coordinate of point P. Look this side. If you are taking this ratio as M1 and this ratio as M2, you know about the formula, basic formula. If we are having a line segment AB, X1, Y1 and X2, Y2 and a point P, divide this line segment X, Y as X, Y and in the ratio M1 and M2, then the coordinate of point P 4x. X के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? M1 into X2 plus M2 into X1 divided by M1 plus M2, and for the coordinate of Y it is equals to M1 into Y2 plus M2 into Y1 divided by M1 plus M2. In this particular case, here x1
एंड x(y1) एज पॉइंट ए पॉइंट को मैंने क्या ले लिया x1 y1 कितना हो जाएगा x1 4 y1 कितना है -3 इन दैट अनदर केस b की पॉइंट क्या है अपने पास में 8,5 देन इट इज x2, y2 एंड द पर्टिकुलर पॉइंट p मान रहा हूँ इसको डिवाइड कर रहा है सो दिस पॉइंट लेट एज x, y फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा x इज इक्वल टू m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाय y m1 प्लस m2 नाउ x रिमेन एज x2 कितना अपने पास में 8 मल्टीप्लाई बाय 3 8 इंटू 3 प्लस m2 कितना अपने पास में 1 एंड x1 कितना दिया हुआ है 4 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 8 3 जा 24 and 4 3 plus 1 4 when you add these two terms get 28 divided by 4 value is 7 clear to you यहाँ पे क्या होगा 24 plus 4 कितना हो जाएगा 28 divided by 4 then you get 7 in another case y is equals to you know the formula for y m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2 place this formula in this case तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y m2 into y1 यानी -1 into 1 -3 into 1 plus 3 into 5 this term is 3 into 5 divided by 3 plus 1 here this term is -3 into 1 -3 3 5 are 15 and 3 plus 1 4 when you add these two terms कितना आ जाएगा 15 minus 3 12 divided by 4 कितना आ जाएगा 3 and the coordinate of this point P as x कितना आ रहा है 7 and y कितना आ रहा है अपने पास में 3 so your answer is 7, 3 clear to everyone thank you